Yeah. Good morning, ma'am. You are in Chennai? John sir doesn't Morning. speak Hindi, Priya. Okay. Good Good morning. morning, ma'am. Trying to understand Hindi bit by bit. Yeah, You're from Chennai or Odisha or where? Kanyakumari, Cape Comorin. Okay. Cape Comorin. Yeah, there's But you live in, he you live in Chennai, but yeah, but from 1985 in Chennai. Who lives in Chennai? great. My ex-boss, my first ex-boss lives in Chennai, Captain Rajkumar Selvaraj, if you know. He's a very famous person there. He's connecting schools and all. Earlier, he was in Secunderabad. Okay, so we'll have our chit chat later. Wish you all a very good morning and a very beautiful morning and a super successful day. So being a weekend, we have lots of practices to do on the weekends. In addition to what we already get, sometimes we can write our affirmation 11 times, or you can write them 11 different affirmations we have, that applies to our life, our body. तो उनको हम 11 बार लिख सकते हैं और ये रोज कर सकते हैं जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा. जितना अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में हम टाइम लगाएंगे उतनी ही हमारी लाइफ ग्रो होती है. और ये सारी सेल्फ डेवलपमेंट टेक्निक्स है और जितनी सेल्फ डेवलपमेंट में एफर्ट्स लगाएंगे उतनी ही बाहर की दुनिया में एफर्ट्स कम हो जाएंगे. देयर विल बी नो एफर्ट्स रिक्वायर्ड इफ यू एफर्ट ऑन योरसेल्फ. So इसलिए अपने लिए करना, like to kind of write affirmation, think positive, visualization, meditation, reading, writing, listening, recording your own affirmations and then listening to them. So in that, all the 5 senses are used. Okay. And that is making an effort on yourself. Okay. So we become so much of a better person and so positive. एंड ये हमेशा याद रखे दैट एवरी सेल ऑफ अ बॉडी, हमारे दिमाग में जो थॉट्स आते हैं उनको वो सुनती है. बॉडी का हर एक सेल रिस्पॉन्ड करता है बेसिस व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर माइंड इन टर्म्स ऑफ थॉट्स. Okay, so controlling the thoughts is very important. So from yesterday, since yesterday, we have started doing the practices जो हमको directly हमारे लिए नहीं होती है, selfless practices कर रहे हैं. Yesterday we did the magical air. Today we are doing magic wand. Magic wand is in Hindi जादू की छड़ी. That means that अब तक अगर हमने कल last paragraph में we had studied that if you have done this magical air practice और जब sunset, sunrise, पेड़ पौधे, like पशु पक्षियों के लिए, for the dew on the grass, for the butterfly, for the flowers, for the rains, for the beautiful clouds, for the 5 elements, जब आप इन चीजों के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर देते हो और दिल से आपका निकलने लग जाता है, that means you have become a true alchemist. आप वो कीमेगार बन गए हो जो सोने को भी पत्थर में बदल देता है. ठीक है, तो वो स्टेज जब हमारी आ जाती है तो उस सोने को, जो हुनर हमने पाया है, ये प्रैक्टिसेस कर करके उस हुनर को, उस काबिलियत को, टैलेंट को, एबिलिटी को वी विल बी यूजिंग फॉर द अदर्स अराउंड अस, पीपल हु आर सफरिंग. ओके, बिकॉज हम में ये पावर है कि हम किसी को भी हील कर सकते हैं. हम हील करना doesn't always mean health related. Healing from business problems, healing them from physical problems, healing people in terms of giving them power to so that they can become happy and achieve what they want to. So ये सारी चीजें we have that kind of a power now. And ये हम उस बात दूसरे चैप्टर में भी आज हमारा कंटेंट है. So this is so much in sync. We are doing healing others in the creative visualization book and we are doing healing others here also. But वहां पे more to do with health है because हम health वाला चैप्टर कर रहे हैं. But यहाँ पे it is more to do with helping them achieve their goals. Sad है, उनकी job नहीं लग रही है, they want a good job, then we can be a magic wand to them. They want to travel but they're not able to, they are sick, so we are not, maybe they are on the verge of a divorce, so we can actually do magic wand for them कि उनकी बहुत smooth journey हो life में. डिवोर्स करना नहीं करना ये उनका डिसीजन है, ये हमारा डिसीजन नहीं है. लेकिन हाँ, हम दोनों की जिंदगी, जो दोनों पीपल इन्वॉल्व हैं डिवोर्स में, उनको सफरिंग नहीं होना चाहिए. एट टाइम्स डिवोर्स लेना जरूरी होता है, फॉर वट एवर रीजंस. हो सकता है कि दोनों के लिए अलग अलग कोई पार्टनर, अलग अलग कोई सोलमेट बना हुआ हो, विच इज ऑल राइट.
Okay, so we cannot decide कि उनका divorce नहीं हो, because we don't know, the side of the story. But yes, there has to be zero suffering and a lot of dignity and respect in the relationship, so much so that they should be friends forever and they bless each other उस level तक. तो ये हमारा काम है कि हम उन पे magic dust करेंगे of happiness, or togetherness. अगर आपको लग रहा है they both really want to be together, तो happiness, togetherness का, or whatever it is that you want, that everything should be very smooth, respectful and dignified. And so this is the chapter for today, that we are the magic wand. हम वो जादू की छड़ी है जो किसी भी जिंदगी में अफेक्ट अपना हम कर सकते हैं अब. तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और जो एनर्जी हम देते हैं किसी और को वो हमारे पास हमेशा जरूर आती है, मल्टीप्लाई होके वो भी. So yes, Mr. Dishant, please read it for us. Weekend आ गया आपका, weekend is yours. Hello, ma'am. Hi, good morning. Hi, आपने अपनी permanent seat reserve करा दी है weekends पे. Have you noticed that? Yes, ma'am. Youth representation. Yeah. So, oh, 1 second. I'll just explain the picture here. Magic wand में हमको एक person, एक quote नजर आ रहा है. Face will be whosoever you decide. आपको decide करना है ये चेहरा किसका है. हो सकता है आपका भाई का है क्योंकि उसका business नहीं चल रहा. हो सकता है कि आपके nephew का है. हो सकता है आपके बॉस का है. हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड का है. हो सकता है आपके मम्मा का है. हो सकता है आपके पापा का है. हो सकता है आपकी फर्स्ट कजिन का है. हो सकता है आपके नेबर का है ना. किसी का भी हो सकता है जिसकी लाइफ में अभी सफरिंग चल रही है, एंड यू जस्ट वांट टू रिमूव दैट सफरिंग फ्रॉम दैट पर्सन्स लाइफ. ये उसका फेस होगा यहाँ पे, विच वी हैव टू पुट. ओके, एंड दिस इज लाइक द हैट, magician's hat है, and there is a magic wand. Magic wand is directed to that person's face. इसका मतलब है we will need to use the photograph. If it is so directed to the person's face, it means that we will need the photograph of the person today. Okay, that and पढ़ते हैं अब हम ये magic wand बनेंगे और किसी की जिंदगी में रोशनी लेके आएंगे, क्योंकि if you see the edge of it, यहाँ पे बहुत सारा sparkles है ना. सो हम किसी की अंधेरी जिंदगी में रोशनी लेके आएंगे, गुरु बनेंगे. गु का मतलब होता है अंधेरा, रू का मतलब होता है रोशनी. तो अंधेरे में जो रोशनी लेके आता है उसको गुरु बोलते हैं. हाँ जी. Good morning, everyone. So I would start now. Day 24, the magic wand. Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magical wand to help others. When you fervently want to help another person, you have immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. Energy flows where your attention goes. And so, when you direct the energy of gratitude towards another person's needs, that is where the energy goes. This is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. Now, gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with energy of your desire, it is just like having a magic wand. I quote, people who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. I unquote. Thomas Leonard, personal development coach. If you have a family member, friend, or anyone you care about who's lacking physical health, is in financial trouble, is unhappy in their work, stressed, suffering because the relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude
to help them with their health, wealth, and happiness. Now, to wave your magic wand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored and say the magic words, thank you, in the heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that person's health had been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magic practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done. And you're saying the magic words, thank you, because you have received the amazing news. If a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. Today, choose three people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all three. Get a photograph of each person if you have one and keep the photographs in front of you while doing this practice. So take the first person, hold their photograph in your hand, then close your eyes and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. Say, open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words, thank you, slowly 3 times for that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. Thank you, thank you, thank you for a person's health, wealth, or happiness. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth, or happiness to all these 3 people. You can also use this powerful practice when you are walking down the streets or going about your day and you come across someone who's obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind, wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness. And know that you have set a real force of energy into motion. Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that health, wealth, and happiness
you fervently wish for others, you also bring to yourself. So now, the magic practice number 24, the magic wand. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Choose 3 people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, happiness, or all 3. Number 3, if you have them, collect a photograph of each of these 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Number 4, take one person at a time and hold their photographs in your hand. Close your eyes and for 1 minute, visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you're receiving the good news. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic word slowly. Thank you, thank you, thank you for that person's name, health, wealth, or happiness. Number 6, as you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice for all the 3 people. Number 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Dishant. Thank you. There's so much of a confidence, pep, and happiness in your voice now, and I'm glad about it. Thank you so much. Dono ke liye thank you. So every chapter begins with a quote. This chapter has not begun with a quote क्योंकि इसमें सबसे पहले ये बताया है कि you know, like अब आपको कभी भी होता है that any of your loved one in the life or people you care about, if they are suffering in any way, okay, उनको कोई भी problem चल रही है financially, relationship wise, health wise, now you have that power to transform their energy. ठीक है, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी पे इतना वर्क कर लिया है that now we are ready to transform everybody's energy and heal them, change them, bless them, whatever. So जो कल मैंने एक वो जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी वाला कोट भेजा था, that is to heal someone else only, no? जो दूसरी जगह पे बैठा हुआ है, he is not even in this country, this person is sitting in some other country. So उसमें आप उनका बस वो जो एफर्मेशन था उसमें नाम चेंज कर देना. मतलब उसमें मैंने तो फादर के लिए दी थी उनके, सो उनके फादर का सर्जरी था, बट देन ऑफ कोर्स यू कैन यूज इट फॉर एनीवन एल्स एंड जो भी आप उनको बोलते हो उनके लिए. That means when you really do it, that energy immediately goes to the other person and it starts influencing them, exerting the influence. Let me put it that way, because her book में it's exerting the influence. Exert is a, you know, powerful word. So अब हमारे पास ये पावर है that, you know, बस हमारे, it's almost like who's the magic wand? We are the magic wand. It's not like a जादू की छड़ी जो हाथ में पकड़ रखी है कोई अलग से. हम खुद ही, हमारी एनर्जी मैजिक वॉन्ड की तरह काम करेगी, है ना? बट ये वाली जो प्रैक्टिस हम करेंगे इसमें ऑफ कोर्स वी हैव टू चूज 3 people who we fervently want to wish. Fervently मतलब ये रियली डिजायर अंदर से कि हम उनकी जिंदगी को इन्फ्लुएंस करें, तभी वो फीलिंग आएगी, बिकॉज फीलिंग इज द फ्यूअल. ठीक है, अगर वो आप उनको जानते नहीं हो तो शायद इतनी डेस्परेट, मतलब डेस्परेट वर्ड आई शुड नॉट यूज बिकॉज इट्स नॉट अ गुड वर्ड, ओके, वो वाला स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आएगी अगर आप उनको जानते नहीं हो. सो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है दैट समवन यू रियली केयर अबाउट, अगर उन पे मैजिक वॉन्ड अगर हमको करना है, सो यू चूज दोज 3 people जिनको आप जेन्युइनली बहुत खुश देखना चाहते हो बिकॉज दे हैव बीन सफरिंग फॉर अ व्हाइल, या फिर उनकी कोई विशेष नहीं आंसर हो रही है, या आपको जो भी, मतलब उनका कोई डिजायर था और वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको कोई फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल चल रही है, व्हाटएवर इट इज. ठीक है,
So you can do that by waving your wand on the people you love. It is that simple, है ना? जब हमको हेल्प करने का जब किसी को मन होता है तो अपनी एनर्जी चेक कर लेना उसके पहले जरा, है ना? अपनी एनर्जी हाई होगी तभी आप दूसरों की एनर्जी चेंज कर सकते हो. तो ये प्रैक्टिस जब आप करोगे, ये इसमें लिखा नहीं हुआ है बट मैं बता रही हूँ कि जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये देखना है दैट आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में होने चाहिए. ठीक है? इफ यू रियली वांट दैट इमीडिएटली असर हो जाए दूसरे पर्सन पे तो अपनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करो. अगर आप लो जोन में हो तो करो 100 ब्लेसिंग्स लिखो, 300 ब्लेसिंग्स लिखो, कुछ ऐसा करो, मैजिक फुटस्टेप्स करो, अपनी फ्रीक्वेंसी को एलिवेट करो पहले और फिर उसके बाद ये वाली प्रैक्टिस करना. फिर आप देखना कि कितना जल्दी दूसरे पे इफेक्ट हो जाता है. अगर आप फीलिंग लो कर रहे हो, इफ यू फीलिंग लो, it is very difficult for you to radiate that energy from your life to the other person. ठीक है? इसका बस ध्यान रख लेना. So इसमें ये है that energy flows where your attention goes. अब attention तो आपको सारा उन पे देना पड़ेगा. इसीलिए in today's practice उस image में कोड बना हुआ था and the face was missing. So उस face पे आपको उस person का चेहरा लगाना है जिसकी जिंदगी आप बदलना चाहते हो और किसी particular area में. और इसलिए we will need the photographs. So we have to choose those 3 people in our life. उनकी फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए. कहीं से भी आप अपनी गैलरी में, you can put it on your phone gallery. ठीक है? तो वहां पे आप डाल लो. इंस्टाग्राम से ले लो, कहीं से फेसबुक से ले सकते हो, कहीं से भी आप लेके उनकी फोटो आपके पास होनी चाहिए. अगर बिल्कुल ही नहीं है फोटो तो आप इमेजिन कर सकते हो. जैसे अगर आपके मम्मा पापा हैं, उनकी आपको फोटो की जरूरत नहीं होती है ना, वो तो हमेशा दिल में होते हैं. तो देन यू विल नॉट नीड. तो फिर आप इमेजिन कर सकते हो. अगर वैसे तो मदर फादर की फोटो होनी चाहिए ना नहीं है तो फिर कुछ करो इस बारे में. सो वैसे मतलब ये फीलिंग एलिवेट करने के लिए और फोकस करने के लिए वी नीड द पिक्चर. So energy flows where your attention goes. So when you direct the energy of gratitude towards another person's needs, that's where the energy goes. तो अगर आप solution oriented होके उनकी लाइफ में, ठीक है, अभी तक तो हम क्या है प्रॉब्लम कि ओ मेरी मामा को ही हो गया, मेरी मामा को ही हो गया, मेरी मामा को ही हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है. नाउ यू आर सोल्यूशन ओरिएंटेड, है ना? क्योंकि हमको डेलिबरेटली ये सिखाया हुआ है दैट यू डोंट हैव टू बी प्रॉब्लम ओरिएंटेड, यू हैव टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड. Think more about the solution. Think more about the outcome. Be in the future presence. Okay? Instead of dwelling in the past. So, ये हमको करना पड़ेगा. This is a mental muscle we need to train us about. So, when we are in the future presence, suppose आपकी मम्मा है, उनकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप बार बार सोचो healing. Okay? Healing happiness. Healing happiness. Health, wealth, happiness. So this is what you need to direct this particular energy to her life or your dad. तो आपको ये वाली एनर्जी डायरेक्ट करनी है उनको. ठीक है? एंड फिर एनर्जी बहुत जल्दी, बिकॉज एनर्जी जब जाती है, एनर्जी को बिल्कुल भी टाइम और स्पेस नहीं चाहिए होता. इट इमीडिएटली गोज. द मोमेंट यू हैव थॉट, इट इज ऑलरेडी डन, इट इज ऑलरेडी गॉन. दैट इज व्हाट इट इज, है ना? और प्लस उसको वो एनर्जी, ये तो साइंस है that whenever that energy flows where attention goes. Now we are combining this science with gratitude and making it one. Okay? हम थैंक यू बोलेंगे कि हमारी मम्मा की हेल्थ इतनी अच्छी हो गई, और इमेजिन करेंगे कि आपकी मम्मा इज टेलिंग यू दैट आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली ओके, बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी हेल्थ है, सब ठीक हो गया, पता नहीं कैसे ऐसा लग रहा है कि मिरेकल की तरह ठीक हो गया, एंड आई एम फीलिंग सो गुड. ओके? फिर आप थैंक यू बोलोगे. सो इसमें सब कुछ है. इसमें पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही होता है कि आप जहां एनर्जी डालते हो वही एनर्जी, मतलब इट गोज टू द राइट पर्सन. ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है, सेकंड प्रैक्टिस, और थर्ड विजुअलाइजेशन है. तो ये तीनों चीजों का अमेलगमेशन है ये. सो यू हैव टू डू इट लाइक दैट. और तीनों का सिंगल शॉट में बैठ के करना है. सो वी हैव चोजन 3 people in our life. So we've done it with the first person, then we do it with the second person, then we will do it with the third person in a single shot. You don't have to do it in the morning. You can do it at any time of the day. ठीक है? जब आप खुद मेंटल पीस में और आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, उस वक्त कर लेना. या थोड़ा मेडिटेट करो इसके पहले 5-7 minutes के लिए, उसके बाद then you can do. ठीक है? इसीलिए इसमें लिखा हुआ है that Jesus भी, बाइबल में भी है कि Jesus always said thank you before he performed any miracle. So वो तो हायर कॉन्शियसनेस जीसस के फॉर्म में जन्म लिया था उन्होंने अर्थ पे इन द ह्यूमन फॉर्म, बट बेसिकली तो वो हायर कॉन्शियसनेस ही थे, गॉड दैट वी कॉल.
तो और उन्होंने बहुत लोगों को हील किया था. He would touch and heal, he would talk and heal, you know, it was like that. So it is the same, but as we say that the higher consciousness energy lies within each of us, lest we realize it. Okay, because हम अभी भी 4-5% एनर्जी को यूज कर पा रहे हैं. बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी करेंगे तो वी कैन टैप, लाइक आइंस्टीन यूज 6%, we are using 4%, but we can, you know, like these are the practices. जब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को हम समझ लेंगे ना, तो हमें आउटवर्ड चीजों के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती है. ठीक है, लेकिन देखो वो एनर्जी भी आप कॉन्जर कर पाओगे जब आपके लाइफ में कंसिस्टेंसी रहेगी ऑफ द प्रैक्टिसेस. मतलब वो जो बुक्स हमने पढ़ी हैं. अब व्हाई एम आई इमीडिएटली एबल टू टेल यू कि हाँ पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड के उस चैप्टर में ऐसा था, बिकॉज कंसिस्टेंटली पढ़ा है उसको. ठीक है, ऐसा नहीं था कि किसी दिन नींद नहीं खुली, किसी दिन ये काम हो गया, किसी दिन वो काम हो गया. होता है कभी कभी ऐसे. अगर मैं फ्लाइट में होती हूँ और पूनम या प्रिया सेशंस लेते हैं तो मैं कभी सेशन नहीं मिस करती. द मोमेंट आई लैंड एंड द मोमेंट प्रिया पोस्ट्स ऑन द ग्रुप ऑन द यूट्यूब, आई गो बैक टू द यूट्यूब एंड आई लिसन टू द सेशन, not thinking that oh I know already. No, it's never like that. कंसिस्टेंसी में रहना बहुत जरूरी है. कल जितना किया था उसके बाद वे फॉरवर्ड इतना. इट्स नॉट अबाउट आई नो द प्रैक्टिस, दैट्स एन एरोगेंस. whenever we think that oh मुझे already पता लग गया, that's an arrogance. Arrogance is way below the line feeling in the feeling chart. An arrogant person never gets success in life, है ना. तो इसीलिए always be a learner, always be a sponge. हाँ, of course we learn from each other. We have so many people, you know, we have John sir, we have Savinder auntie, ये सब हमसे बड़े लोग हैं. They have experienced life, है ना, and they have won over it. So of course there's so much we can learn for people जो हमारे से एज में सीनियर होते हैं, and from whom, you know, there's so much to teach us. So छोटी छोटी चीजें हम उनसे सीख सकते हैं. So I was so happy yesterday when John sir read, you know, like I mean that is so much being in sync and you know being so. अभी तो वो अभी 30 years के हो ही जाएंगे, because हम सबके साथ रह के chronological age और biological age अलग अलग होती है. So but yes, from the wisdom of people who have seen life, even if they are just 2 years older to us. Okay, but yes, in 2 years also see how much we have grown in 2 years and what we were 2 years earlier. We've grown so much. In 3 months we have grown so much. This is called the wisdom of the life, है ना. तो एक दूसरे से सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो. ठीक है, इसीलिए कल जब प्रिया ने वो एक्सपीरियंस शेयर किया था किसी मेंबर का, तो मैंने यही बोला था ना कि दिस इज सो ब्यूटीफुल कि उनके 3 टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट हो गए, लाइक 88,000 गॉट सेव्ड एंड एवरीथिंग इज यू नो बेटर देन व्हाट शी हैड इमेजिन्ड. तभी मैंने कहा था ना कि लेट अस नो व्हाट प्रैक्टिसेस शी डिड सो दैट वी कैन आल्सो डू दैट, है ना. इट्स ऑलवेज अबाउट व्हाट हैज द अदर पर्सन डन, लेट मी आल्सो ट्राई डूइंग इट, isn't it? So sometimes whenever there's some issue or sometimes when I have time, I always tell you that I write 333 blessings, because 3 is the power. 3 plus 3 plus 3, 9, and 3 into 3 is also 9. 9 is a number, it's a powerful number of creation. So many times when I've had the time on my hand, I have written 333 times blessings. अलग अलग चीजों के लिए, मतलब I segregate them. 10-20 I write for earth, then 10-20 I write for mom, then 10-20 for dad, 10-20 for my siblings, like that, you know, and so many things for the sun, that you dry the clothes in the sun. Then sometimes, you know, whenever we make a pickle or something, we put it in the sun. So बहुत सारी चीजें होती है that the sun does. कुछ गीला हो जाता है तो हम बाहर, you know, dry होने के लिए लगाते हैं. Even the foot mats, we put it in the sun. We love the morning light. Whenever the sunrise happens, you know, that beautiful light that comes in, we are able to read and write because of the sunlight, you know, with much clarity. When it is winters, you know, sun is so soothing and it keeps us warm. You know, the natural light and warmth and the tree, vegetation, everything is because of the sun. So इस frequency में रह के अपनी frequency high करनी पड़ती है. And it's not very easy for me also. I work for Asia's biggest corporate, so it is not easy professionally and personally. There's a cutthroat competition in the world, and I never compete because I only compete with myself. So it's different when you go out in the world. You know, there the real conduct of yours actually gets tested. है ना. सब कुछ शुरू होता है जब ये सेशन खत्म हो जाता है. जिंदगी तब शुरू होती है जब ये सेशन खत्म हो जाता है कि अब कैसा आपका कंडक्ट है. अब आप पे कोई चिल्ला रहा है तो व्हाट इज योर बिहेवियर. अब थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, देन व्हाट इज योर बिहेवियर, है ना.
और वो सब स्केल करके अब हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं जब हम लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, और बहुत आराम से आप बोलोगे किसी को और आप देखना कि एग्जैक्टली वैसा ही होगा, ठीक है। इसलिए बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू टेल अदर्स, you know. Don't even say things like, why do you always come late? You're always coming late. I mean, you tell them that, can you just come on time from tomorrow? Try and come on time. Don't say that you are coming late. Okay, don't use any such word. अपनी language, अपने words, हमारे शब्द जो होते हैं उनकी बहुत powerful frequency होती है, ठीक है। और वो जैसे ही शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं इस ब्रह्मांड की एनर्जी में मिल जाते हैं, and it starts radiating in our life, whether it was directed to someone else. Even if you've said things like you're stupid, even if you've said this word, माइल्ड लैंग्वेज है, बहुत नॉर्मल, आजकल के यूथ की बहुत कॉमन लैंग्वेज है ये सब, ठीक है। सो you've said this word, you stupid. Now that stupid word is getting directed to our life, and in many situations in our life we will be dumb and stupid. Okay, so we need to be very, very careful about the words. Okay, because we have this power to transform others' life also. So आज की practice में we are just directing this positive energy that we have accumulated for so many months and years and days now, and healing the other person's life with health, wealth, happiness. So one time practice है ये, पूरे दिन में you can do it at any point of time. Sit at one place, be very, very relaxed and comfortable in your skin, very relaxed in the body. और फिर उसके बाद तीनों की फोटो आपको रखनी है, ठीक है। गैलरी में हो सकती है, हार्ड कॉपी हो सकती है, whatever. पहले की फोटो लेनी है और उनको अच्छे से देख के घूर के देखना है, ठीक है, बिकॉज पूरी एनर्जी उनके लाइफ में जानी है। और फोटो में फेस से बहुत जल्दी एनर्जी जाती है। दिस आई हैव सीन, आई हैव डन सम प्रैक्टिसेस विदाउट पिक्चर्स एंड सम विद पिक्चर्स, बट व्हेन इट इज विद अ पिक्चर बहुत फर्क पड़ता है। सो नाउ यू हैव टू, यू सीन, लुक्ड एट द पिक्चर, नाउ यू इमेजिन, विजुअलाइजेशन चलेगा कि जो भी उस पर्सन का इशू है, सपोज उस आपका भाई है, उसको अपने, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब एंड ही वांट्स द राइट ब्रेक, ठीक है, या फिर वो बहुत दारू पीता है, आपको उसको ठीक करना है, कोई भी हो सकता है, या बहुत स्मोकिंग करता है और आपको लग रहा है कि दिस पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ हीलिंग, है ना, बिकॉज एडिक्शन इज अ काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, है ना। तो वो आपको ठीक करना है, एंड आप बहुत बॉदर्ड हो बिकॉज आपकी भाभी और भाई के बच्चे सब लोग सफर कर रहे हैं, आपके मम्मा पापा कि उनका बेटा इतना ड्रिंक कर रहा है ना, तो आपको वो ठीक करना है। आप अपने भाई की फोटो आप सामने, दिस इज जस्ट एज एन एग्जांपल गाइस, आई एम लाइक नो ऑफेंस मेंट टू एनीवन, I mean, like, these are common problems we all face. There are people in our life who drink and smoke too much, and that's never good for health. Okay, so it is just, it's not, I don't want to offend anybody. I mean, like, so now you keep that picture in front of you, जिसकी भी है, जिसको आप heal करना चाहते हो, उसकी सामने रख के, तो और फिर now close your eyes and visualize that this person is so sober. भाई evenings में वही drink करते होंगे ना, तो इवनिंग्स में दैट वो कितना क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ है, एंड इमेजिन कि आप भाई या भाभी जो भी आपसे ज्यादा कनेक्टेड है, वो आपको फोन करके कह रहे हैं दैट यू नो, आप उन्होंने बिल्कुल, ही इज सो सोबर एंड नाउ ही इज लाइक एब्सोल्युटली हेल्दी, ही डजंट इवन गेट द अर्ज टू ड्रिंक, एंड यू नो, लाइक एवरीथिंग, एंड ही स्पेंड सो मच ऑफ क्वालिटी टाइम विद द चिल्ड्रन इन द फैमिली, विद द पेरेंट्स, और इतना रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ करते हैं, उनकी हेल्थ इतनी अच्छी हो गई है, रिपोर्ट्स भी इतनी क्लीन आई है ना, ये सारा सोचा आपने। अब आप उसके बाद आपको बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, भाई का नाम लेके या जिनका भी नाम लेके, फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ओके, एंड खूब मैसिव ग्रैटिट्यूड और जॉय फील करो अपने हार्ट में, आंखें बंद में, ठीक है, खूब मैसिव जॉय एंड ग्रैटिट्यूड फील करो कि वाओ, दिस इज सो अमेजिंग, थैंक यू यूनिवर्स फॉर डूइंग दिस, यू नो, लाइक फॉर आंसरिंग माय प्रेयर, and that's it. Now you go to the second person immediately after, there should not be any time gap. Go to the second person, अब उसकी फोटो उठाओ, उसकी हेल्थ में ब्रेकडाउन चल रहा है, मे बी उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई चल रहा है ना, अब आप उसकी फोटो उठाओ, और चलो हेल्थ नहीं तो कोई और प्रॉब्लम भी आप ले सकते हो, मे बी उसका अभी व्हाटएवर उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, कुड बी एनीबडी, अ फ्रेंड ऑफ योर्स वाज इन अ रिलेशनशिप, अभी रॉकी चल रहा है, पहले उन्होंने डिसाइड कर लिया था शादी कर रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि नो वी आर नॉट टुगेदर, या आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू रीथिंक। अब उनकी फोटो सामने रखो आप,
उस पर्सन की, ठीक है, एंड थिंक दैट ही सेइंग दैट नो एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल और बहुत अच्छा रिलेशनशिप है हमारा, वी सैट एंड देयर वर सर्टेन मिसअंडरस्टैंडिंग, सो हमने दूर कर दी है, सब कुछ बहुत हैप्पी हो गया, बहुत खुश है, इनफैक्ट अभी अभी हम वेकेशन के लिए भी जा रहे हैं, डे आफ्टर टुमारो इज माय फ्लाइट, और व्हाटएवर यू वांट टू थिंक, ठीक है, दैट, एंड देन से थैंक यू फॉर सो एंड सो पर्सन्स हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तीनों बोलना है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, तो तीनों बोलो, अगर आपको स्पेसिफिकली उसके लिए बोलना है वो भी कर सकते हो, बट आई डू इट विद ऑल थ्री बिकॉज सबको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहिए होती है ना मतलब किसको नहीं चाहिए। फिर उसके बाद थर्ड पर्सन को उठा के एग्जैक्टली सेम करना है विजुअलाइजेशन में, कि वो आपको बता रहे हैं वो कितने खुश हैं, आप अगर आप उनसे मिले हो, वो तो था कि भाई दूर रहता है इसीलिए वो फोन पे भाभी या भाई आपको बता रहे थे, बट अगर आप मिलते हो उस पर्सन से, तो देन दैट आप इन पर्सन आप बात कर रहे हो एंड दैट पर्सन इज शोइंग यू व्हाटएवर, लाइक जो भी प्रूफ है ऐसा ऐसा कि लुक एट माय एंगेजमेंट रिंग, दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड यू नो सो एंड सो पर्सन हैज गिवन मी दिस एंड आई एम फीलिंग सो गुड अबाउट इट, और व्हाटएवर इट इज। अगर किसी की जॉब छूट गई है तो उसके फोटो में डायरेक्ट करना है कि वो आपको बता रहा है कि यू नो मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मेरी इतनी अच्छी जॉब लगी है, मेरे घर से इतना पास है और बिल्कुल ही नॉन ट्रैफिक जोन भी है वहां पे, और जाने में भी सिर्फ 20 मिनट्स लगेंगे, इट इज दैट क्लोज, और मुझे यही प्रोफाइल चाहिए थी इतने टाइम से, फाइनली मुझे मिल गई, पैकेज मेरा, मैंने तो इतना सोचा था कि इतना भी मिल जाएगा बहुत है, लेकिन मेरे उससे भी कहीं ज्यादा पैकेज मिला है, आई एम सो हैप्पी यू नो कि आई हैव गॉट दिस, एंड इट इज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जैसे मिरेकल हो गया है, बिकॉज सब कुछ वही है जो मैंने सपने में सोचा था कि मुझे ऐसी जॉब मिलेगी, है ना। यू हैव टू थिंक दिस इन विजुअलाइजेशन and say thank you for this person's perfect health, wealth, happiness, or for his job, for his ideal dream job that has come to his life. So this is the practice that we have to do today. One time practice for all three people. We have to do it in a single shot. और तीनों की फोटो के साथ में करना है, ठीक है? That is it. So it says people who wait for the magic wand fail to see that they are the magic wand right now as you are. You are the magic wand. ठीक है, बस यही है आज की प्रैक्टिस। इसमें क्या है, हाँ, now we go to the practices for today. Count your blessings. सुबह सुबह की प्रैक्टिस है। We are starting a day with gratitude. We write 10 blessings, then we reread them, और एक एक के बाद हम थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद आज 3 लोगों को हमको चूज करना है who you really care about, आपको बहुत जेन्युइनली उनको हेल्प करने की, उनको खुश देखने का मन कर रहा है, ठीक है, और उनको लेके उनकी फोटो लेके अपने सामने रख के मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस करनी है। पहला पर्सन लेना है, उसकी फोटो आपको सामने रखनी है, उसके बाद आपको विजुअलाइजेशन करना है मिनिमम 1 मिनट के लिए, उसके बाद आंखें खोलनी है, फोटो को सामने रख के बोलना है थैंक यू बिकॉज 3 is the number of creation and gratitude combined with the 3 creation process sets the universe's energy into motion. So thank you for so and so person's health, wealth or happiness. और पहले पर्सन को फिनिश किया तो दूसरे पर्सन पे जाओ, दूसरे को किया उसी टाइम तीसरे पर्सन को जाओ, इन अ सिंगल शॉट तीनों का करना है। ऐसे नहीं कि यू हैव डन फॉर द फर्स्ट पर्सन, नाउ आफ्टर 1 hour यू आर डूइंग फॉर द सेकंड पर्सन, नो, ठीक है, वो फोकस एंड एनर्जी इकट्ठे होना चाहिए। एंड रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, टेक द स्टोन इन योर हैंड, क्लोज द मुट्ठी, okay, close your fist, उसके बाद scan through the surface of the day, go beneath the surface also and see what all things happen, choose the best one and say, you know, like thank you for that, and then go to sleep with the visualization that health, wealth, happiness, success and wealth is mine now. Dr. Joseph Murphy बोलते हैं ऐसे बोलो, this is mine now, so you're claiming it. Okay, so whatever it is, I do happiness, wealth and success is mine now. So जो भी आपको करना है ये बोल के अपने मन में सो जाओ, ठीक है, फिर उल्टे पुल्टे ख्याल भी नहीं आएंगे और फिर फोकस करने की भी आदत पड़ जाएगी। बस ये करके सो जाओ एंड देन यू सी नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल बी लाइक वाओ, ऐसे फिर नींद खुलती है बिकॉज यू स्लीपिंग इन दैट, बिकॉज यू सोन द सीड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इन द नाइट। पहले तो पूरा मैजिक रॉक किया अच्छे से, उसके बाद ये भी बोल दिया है happiness, wealth and success is mine now. So it's literally like you're claiming it and you think you're so worthy because it's a powerful sentence. So that's what I do. So I shared what I do.
but it's your call what you want to do. Okay, now this is the second book that we do for people who are new, is Creative Visualization by Shakti Gawain. And इसमें अभी हम जो चैप्टर कर रहे हैं हीलिंग, उसमें से हमने अपनी पर्सनल हीलिंग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी थे. अब हम कर रहे हैं हीलिंग अदर्स, समथिंग लाइक मैजिक वॉन्ड, या changing the life of the other person. So that's what we are doing right now, healing others. So कल हमने पढ़ा था कि आप में बहुत ज्यादा पावर है किसी और को हील करने की, by directing the energy and visualizing. Okay, so अब हम आगे पढ़ेंगे उसके. So Reena, are you reading for us? Yes, ma'am. Good morning. Yeah, Yes, you I start. am. Ma'am, screen पे आ नहीं रहा है अभी वो heading healing others. Really? Yes. नहीं मैम आ रहा है, स्क्रीन इज ऑन, इसमें इन माय एक्सपीरियंस से पढ़ना है शायद रीना. हाँ, अच्छा मुझे लगा healing others की heading से पढ़ना है. नहीं Okay. हेडिंग नहीं, वो कल पढ़ा था कि आप में बहुत पावर है और आप इंस्टेंटली किसी की लाइफ में हीलिंग ला सकते हो. जैसे किसी को किडनी में दर्द हो रहा है, मे बी किडनी स्टोन है, तो आप वहां पे डायरेक्ट कर सकते हो. ये हमने कल पढ़ा था कि हीलिंग अदर्स आप फोकस करके डायरेक्ट कर सकते हो अपनी एनर्जी, और विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत पावरफुल होती है. सो यू हैव टू मेडिटेट ऑन दैट, on that person's health. ये हमने कल पढ़ा था, यही मैंने अभी बताया था, और इन माय एक्सपीरियंस से आज से पढ़ना है. Okay. In my experience, I have found that the best way to work on healing is to picture myself as a clear channel for healing energy and envision the spiritual energy of the universe flowing through me to the person who needs it. I think of my higher self sending energy to the other person's higher self to support them in whatever they need to do to heal themselves, keeping in mind that it's okay if the person chooses not to get well. At the same time, I picture the person as he or she truly is, a divine being, a beautiful and perfect expression of God, naturally healthy and happy. In part 3, I describe the healing methods that I have found work best for me. I encourage you to try them and to discover your own. Yeah, so इसमें if you've noticed, पहले इन्होंने बोला है कि before you start healing the other person, आप अपने आप को फील करो. फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ. और जैसे अब आप बैठे हो एक जगह मेडिटेट करके दूसरे को हील करने के लिए, और आपको अपनी भी एनर्जी को फोकस करना पड़ेगा ना, फिर आप डायरेक्ट करोगे एक चैनल की तरह उनकी जिंदगी में, जो भी दूसरा पर्सन है. उसके लिए आपको अपने आप को ये बिलीव करना पड़ेगा that I am a channel of the spiritual energy of the universe and I'm healing the other person with that spiritual energy. ठीक है, ये इसके फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ था. that पहले believe and understand that you are a spiritual energy and the universe is flowing through you to that person. ओके, जब ये सोचेंगे तो हमारी एनर्जी जो दूसरे को अफेक्ट करेगी विल बी वेरी पावरफुल, है ना. नहीं तो फिर हमारे भी तो अलग अलग सीन्स चल रहे होते हैं ना दिमाग में, कि हमारी आज हेल्पर नहीं आई है, आज हमको यूटेंसिल्स करने पड़ेंगे, शाम को वहां जाना पड़ेगा, कल रात को नींद नहीं सोए तो सुबह पूरी नहीं हुई है नींद, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड. सो एज in a human psychology, these are the things that always keeps plaguing us. ठीक है, तो इन चीज को हटा के when we are sitting at one place, breathe in deeply, थोड़ा अच्छे से अपने आप को क्लीन करो. ठीक है, ऑक्सीजन बहुत जल्दी आपको क्लीन कर देता है, और आपका हार्मोनल सिचुएशन भी बॉडी में टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड हो जाता है. तो जब आपके हैप्पी हार्मोन, डीप ब्रीदिंग से आपके हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है. नाउ यू थैंक द यूनिवर्स that the universe's energy is flowing through your life to the other person. आप अपनी एनर्जी थोड़ी यूज कर रहे हो, यूनिवर्स के ब्लेसिंग है हम लोग. ओके, सो द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स फ्लोज थ्रू यू, टू यू एंड थ्रू यू. दिस इज ऑल्सो एन एफर्मेशन जो मैंने आपको बताया था. ठीक है, दैट द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, वाहेगुरु, गॉड, सन गॉड, जो भी आप जिस भी गॉड को, जीसस, okay, so is flowing to you and through you
to transform other lives. पहले अपने आप को बार बार ये बोलो और उसके लिए थैंक यू बोलो, because you are just a channel. Okay, so now you do the healing for the other person. और आप डायरेक्ट करो और आंखें बंद किए किए विजुलाइज करो कि उस पर्सन की हेल्थ कितनी अच्छी हो गई है और वो पर्सन की रिपोर्ट्स क्लीन आई है और वो आपको बता रहा है। अगर वो सेम सिटी में रहता है तो आप सोचो कि आप उससे मिलके, अगर मिलते हो, है ना, और अगर बाहर रहता है तो आप यू कैन जस्ट विजुलाइज, मे बी यू आर डूइंग अ फेस टाइम विद दैट पर्सन और यू नो लाइक वीडियो कॉल करके आप देख रहे हो, जैसे भी, बट इस तरह से हमको करना है। तो ये तरीका है लोगों को विश करने का। और अच्छा है ना कि हमको ये पता लग गया कि इस तरह से करते हैं कि पहले यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, दैट यूनिवर्स की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अभी हमारे अंदर भर गई है एंड इट इज फ्लोइंग टू अस एंड थ्रू अस टू द अदर पर्सन, एंड थैंक यूनिवर्स फॉर दैट, एंड देन नाउ यू हील द अदर पर्सन, सो द पावर विल बी लिमिटलेस दैट वे। और इसमें पार्ट 3 या पार्ट 3 पे जब हम तब आएंगे, इन्होंने बार बार इस बुक में बोला है हर प्रैक्टिस के बाद, that in part 3 I'm going to tell you some better techniques and all of that. So waiting for part 3, it's building up the excitement not desperation, excitement. ठीक है? So जब आप heal करते हो किसी को तो आप अपने higher self से, मतलब the power of that, we all have higher consciousness ना, so higher consciousness से हम उसकी higher consciousness को affect कर रहे हैं। and इसमें एक और line लिखी है, that even if that person has given up, है ना भाई, सब तो इस ग्रैटिट्यूड और हायर कॉन्शियसनेस की जर्नी में नहीं होते। लोगों को नहीं पता है कि आपके अंदर गॉड वाली पावर होती है, नहीं पता ना अभी भी लोग। और वो भी दैट पर्सन जिसने 2 years से वो लगातार सफर कर रहा है, 2 years इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड, 10 दिन में लोगों का हालत खराब हो जाती है। सो दैट पर्सन इज सफरिंग दैट हेल्थ इशू फॉर द लास्ट 2 years। सो सोचो कि उसका कितना मतलब लो फीलिंग फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, क्योंकि अभी तक हील ही नहीं हुआ है। 2 years must have taken some 50 treatments from different doctors, but nothing has worked. Now you are working on them, so you are the biggest spiritual doctor. Okay, so you are working on them and now they're healing because of your directed and focused energy. So हो सकता है उसकी वजह से, because you're directing energy to them, so maybe that person has given up कि उनको लग रहा है कि नहीं, let me accept my disease or let me accept it कि ठीक है, now I'll always be a diabetic and whatever it is, like जो भी बीमारी है, तो उस person ने accept कर लिया, but it really doesn't matter what that person feels. Maybe that person has given up on his or her life, but you have the power to revive that person. ये भी एक लाइन दी हुई है, ठीक है। आ गया जी पार्ट 3। Part 3. I'm the lucky one to read this. हाँ, you're the lucky one. You're always the lucky one. Yes, true. बढ़िया। Amen. Part 3, meditations and affirmations. Thou shalt decree a thing, and it shall be established unto thee, and the light shall shine upon the ways. Job 22. This is from the Bible. So decree का मतलब होता है making a firm and a strong declaration. जैसे आप बोलो, I'm born to lead and shine wherever I am. I have made that decree that I'm born to lead and shine wherever I am. That's a decree. आपने बोला है that wealth and success is mine now. Something that I do very often. I mean, like रोज रात को मैं सोने के पहले करती हूँ. So अगर आपने ये बोला है तो ये आपने डिक्री किया है, ठीक है। तो अब आप समझो इसको, दाउ मीन्स यू, है ना, यू शैल डिक्री अ थिंग, जो भी आपने डिक्री किया है हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, जो भी करना है, एंड इट शैल बी इस्टेब्लिश्ड अपॉन दी, और वो आपकी जिंदगी में इस्टेब्लिश हो जाएगी। जो भी चीज आपने डिक्री की है, जो भी चीज आपने स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन की है, वो आपकी लाइफ में इस्टेब्लिश हो जाएगी। एंड द लाइट शैल शाइन अपॉन दाई वेज, और आपके ऊपर उस चीज की रोशनी हमेशा रहेगी। ये इसका मतलब है, ठीक है। Grounding yourself and running energy. This is a very simple visualization technique and one which is good to do at the beginning of any meditation. The purpose of it is to get your energy flowing, dissolve any blocks, and keep you firmly connected to the physical plane so that you don't space out during meditation. Sit comfortably with all your back straight
either in a chair or cross-legged on the floor. Close your eyes, breathe slowly and deeply, counting down from 10 to 1 until you feel deeply relaxed. Imagine that there is a long cord attached to the base of your spine, extending down through the floor and way down into the earth. If you wish, you can imagine that this is like the root of a tree growing deep into the ground. This is called a grounding cord. Now, imagine that the energy of the earth is flowing up through this cord and up through the soles of your feet if you are sitting in a chair, and flowing up through all parts of your body and out through the top of your head. Picture this until you really feel the flow well established. Now imagine that the energy of the cosmos is flowing in through the top of your head, through your body, and down through your grounding cord and your feet into the earth. Feel both these flow going in different directions and mixing harmoniously in your body. This meditation keeps you balanced between the रीना मैं एक सेकेंड ही समझा देती हूँ थोड़ा हिंदी में। ये right, एक मेडिटेशन है जो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली जब आप मतलब मेडिटेट करने के पहले मतलब शुरुआत में फर्स्ट थिंग जो आप करो, ठीक है, पहली चीज इसको ग्राउंडिंग टेक्निक बोलते हैं। ग्राउंडिंग टेक्निक से हमको याद रहेगा, बिकॉज ये वर्ड फिर मैं बार बार यूज करूंगी आपको आगे भी, कि पहले ग्राउंडिंग टेक्निक कर लो। ग्राउंडिंग टेक्निक करने का तरीका ये है दैट यू सिटिंग विद योर स्पाइन स्ट्रेट। यू कुड बी सिटिंग, वो क्रॉस लेग जो फ्लोर पे बैठते हैं, और यू कैन बी सिटिंग ऑन अ चेयर विद योर बैक स्ट्रेट, ओके। बट इसमें लिखा हुआ है कि मतलब बताया नहीं है दैट यू कैन लाई डाउन, सो यू डोंट हैव टू लाई डाउन, ओके, सो यू हैव टू बी सिटिंग। आफ्टर दैट यू हैव टू बैकवर्ड काउंट 10 to 1, उल्टी गिनती करनी है 10 से लेके 1 की तरफ, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट है, आंखें बंद है हमारी पूरे टाइम, बिकॉज ये मेडिटेशन प्रैक्टिस है। आंखें बंद है एंड वी आर काउंटिंग 10, 9, 8, 7, ऐसे हमको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है 1 तक, ठीक है। उसके बाद हमको जो हमारी स्पाइन है, जो हमारा सबसे लोअर मोस्ट वर्टिब्रा है, जो हमारी टेल बोन होती है हिप्स के जस्ट ऊपर, वहां से हमको सोचना है कि एक कॉर्ड है जो धरती के नीचे जा रही है, इट इज गोइंग अंडरग्राउंड बिलो द अर्थ, और स्ट्रेट नीचे जा रही है बहुत डीप अर्थ के नीचे, और वहां से एक खूब सारी एनर्जी है अर्थ के नीचे की एनर्जी, वो उस कॉर्ड से वापस ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। इट्स कमिंग अप फ्रॉम द कॉर्ड, आपकी स्पाइन में घुस गई वो एनर्जी, एंड नाउ इट इज रेडिएटिंग नीचे से लेके वो टॉप ऑफ द हेड तक जा रही है, और पूरी बॉडी आपकी उस एनर्जी से इल्यूमिनेट हो चुकी है, ठीक है। अब वो एनर्जी हेड से लेके दोबारा से आपके टेल बोन तक जा रही है, आप बैठे हुए हो और वो टेल बोन तक जा रही है, और दोनों एनर्जी ऊपर की और नीचे की वो पूरी मिक्स हो रही है, और आपकी पूरी बॉडी को उसने भर लिया है, एनकम्पास कर लिया है, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। सो ग्राउंडिंग टेक्निक के 2 हैं प्रोसेसेस। स्टेप नंबर 1 इज बैकवर्ड काउंटिंग। स्टेप नंबर 1 आई थिंक शुड बी क्लोज योर आईज एंड सिट कंफर्टेबली। जब भी मेडिटेशन करो तो आपके कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए, या आपको कहीं पे कॉन्ट्रासेप्शन नहीं फील होना चाहिए। I mean, like whether it is your undergarments, they should not be very tight. Whether it is if you're wearing jeans and trying to sit and jeans is super tight और आपको लग रहा है constricted, तो उसमें meditation में आपका बार बार ध्यान भंग होगा। तो इसीलिए whenever we do meditation, we have to wear very comfortable and loose clothes which are not too snug on us, ठीक है। नहीं तो उससे मेडिटेशन नहीं होता है, मैं करके देख चुकी हूँ, उससे फिर मेडिटेशन नहीं होगा आपका, ठीक है। तो बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स होने चाहिए, एंड यू आर सिटिंग इन अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। इट शुड नॉट बी टू स्वेटी एंड द रूम शुड नॉट बी वेरी कोल्ड, नहीं तो उसमें भी आपका मतलब बिल्कुल वैसा वाला मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है, यू आर स्वेटिंग, ठीक है, या फिर एसी इतना स्ट्रांग है कि आपको ठंड लग रही है, या यू वांट टू गो एंड यूरिनेट, इफ यू वांट टू गो एंड पी, यू गो एंड पी एंड देन सिट, okay, otherwise you will not be able to meditate. Now you sit comfortably and then you think of this. ये process number 1 is make yourself comfortable. उसके ये सारे rules जो मैंने बताए। Now you are step number 2 will be backward counting, धीरे धीरे,
ठीक है, उससे आपकी हार्ट बीट, आपका जो कुछ अगर स्ट्रेस या दिमाग में कुछ चल रहा था, दैट विल सेटल डाउन एंड दैट विल ईज. सो बैकवर्ड काउंटिंग 10 to 1. स्टेप नंबर 3 इज दैट कॉर्ड जो आपके स्पाइन टेल बोन से नीचे जा रही है अर्थ में स्ट्रेट डाउन, और वहां से अर्थ की जो एनर्जी है, अर्थ इज गॉड राइट, सो अर्थ की एनर्जी को इट इज ब्रिंगिंग अप और आपकी पूरी बॉडी में ऊपर हेड की तरफ लेके गई है. सो इट्स अ वन स्ट्रेट लाइन, उस वन स्ट्रेट लाइन में वो ऊपर जा रही है टुवर्ड्स द हेड, और हेड से वापस नीचे जा रही है. एंड दिस एनर्जी इज मिक्सिंग अप इन योर बॉडी, okay, and it's meeting and whole body is illuminated with this powerful energy. This is actually called grounding technique, first type of meditation, but according to Shakti Gawain, start meditation with this. अब आगे क्या है, let's study. हाँ जी. This meditation keeps you balanced between the cosmic energy of vision, fantasy, and the imagination, and the stable earthy energy of the physical plane. A balance that will increase your sense of well-being and your power of manifestation. Yeah. So this is what it says कि इसमें कॉस्मिक एनर्जी और आपकी फिजिकल बॉडी की एनर्जी ये मिक्स हो जाती है. कॉस्मिक एनर्जी कैसे, अर्थ के नीचे से जो एनर्जी आई है तो हमको सारी वो एनर्जी मिल जाती है, प्लस हमारी बॉडी की फिजिकल एनर्जी क्योंकि बॉडी में ही जा रही है, तो ये दोनों अमेलगमेट हो जाती है. हाँ जी. Opening the energy centers. This is a meditation for healing and purifying your body and for getting your energy flowing. It is an excellent exercise to do in the morning when you first wake up, or at the beginning of any meditation period, or anytime you want to be relaxed and refreshed. Lie down on your back with arms at your sides or with hands clasped on your stomach. Close your eyes, relax, and breathe gently, deeply, and slowly. Imagine that there is a glowing sphere of golden light surrounding the top of your head. Breathe deeply and slowly in and out 5 times while you keep your attention on the sphere of light, feeling it radiate from the top of your head. Now, allow your attention to move down to your throat. Again, imagine a golden sphere of light emanating from your throat area. Breathe slowly and in and out 5 times with your attention on this light. Allow your attention to move down to the center of your chest. Once again, imagine the golden light radiating from the center of your chest. Again, take 5 deep breaths as you feel the energy expanding more and more. Next, put your attention on your solar plexus or the area of your navel. Visualize the sphere of golden light all around your midsection. Breathe into it slowly 5 times. Now, visualize the light glowing in and around your pelvic area. Again, take 5 deep breaths, feeling the light energy radiating and expanding. Finally, visualize the glowing sphere of light around your feet and breathe into it 5 more times. Now, imagine all 6 of the spheres of light glowing at once so that your body is like a strand of jewels radiating energy. Breathe deeply, and as you exhale, imagine energy flowing down along the outside of one side of your body from the top of your head to your feet. As you inhale, imagine it flowing up along the other side of your body to the top of your head. Circulate it around your body this way 3 times. Then visualize the flow of energy going from the top of your head down along the front of your body to your feet
as you slowly exhale. As you inhale, feel it flow up along the back of your body to the top of your head. Circulate the flow in this direction 3 times. Now, imagine that the energy is gathering at your feet and let it flow slowly up through the center of your body from your feet to your head, radiating from the top of your head like a fountain of light, then flowing back down the outside of your body to your feet. Repeat this several times or as long as you wish. When you finish this meditation, you will be deeply relaxed, yet energized and accelerated. Yeah, बहुत ही high end meditation है ये. So that divine light flowing through the body wala. So we know that this is relaxing the energy center is meditation. वो वाली थी grounding technique. ये है relaxing the energy centers, opening the energy centers, which means chakras. So we in India, we know so much about the chakras, है ना? 2 of them are in the head. तो इसमें लाइट जब हमको इमेजिन करनी है दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग गोल्डन ब्राइट लाइट जो हमारे हेड से रेडिएट हो रही है, लाइक इट इज फॉर्मिंग लाइक अ सर्कल इन आवर हेड. तो उसमें हमारे दोनों चक्रास आ जाते हैं, है ना? सहस्त्र चक्रा एंड द ज्ञान चक्रा दैट वी हैव हियर, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं. सो ये पूरा रेडिएट हुआ. उसके बाद 5 times we have to breathe deep, thinking that our entire head is covered with that beautiful golden light. उसके बाद then we go down to the throat chakra. अब imagine करना है that golden light आपके गले से, from your throat, it is radiating and you're breathing 5 times. And with each breath, this light is only becoming brighter and bigger. इसके बाद straight away we are coming to the heart chakra, जहां पे हमको फिर से ऐसा फील करना है. Then we go to the solar plexus, navel के बाद पूरा जो pelvic area है उसमें पूरा रेडिएट हो रहा है. वहां पे 2 चक्रास कवर हो जाते हैं, rather 3, right? नेवल का चक्रा होता है एक, ऑफ कोर्स. उसके बाद स्वादिष्ठान होगा एंड देन मूलाधार होगा. सो लोअर पेल्विस में इकट्ठे दैट गोल्डन लाइट इन द लोअर पेल्विस इज रेडिएटिंग एंड इट्स गेटिंग बिगर एंड बिगर, एनकम्पासिंग. सो बिगर एंड बिगर का मतलब होता है कि ऑल द ऑर्गन सराउंडिंग इट, दे आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड इन दैट गोल्डन लाइट, है ना? किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, किसी को रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है, किसी को यूरिनरी प्रॉब्लम है, किसी को कॉन्स्टिपेशन, डायरिया रहता है. तो ये सारे एरिया से सारा एरिया उसके अराउंड ही होता है. उसके बाद स्ट्रेट अवे टेक दैट लाइट डाउन टू द फीट, कि वो चैनल के पैरों के थ्रू आपके पैरों में इल्यूमिनेट करिए. अगेन 5 times you have to deep breathe. So different parts this covers your entire body and every area you have to breathe 5 times slowly in a relaxed way. ठीक है? अब हमको ये इमेजिन करना है that this light is again going up towards the head and your whole body is covered. उसके बाद एक सर्कुलेशन स्टैब्लिश करना है. एक साइड से, दैट इज एक पैर से निकल के वो दूसरे पैर में घुस रही है, ऊपर तक आ रही है, ऊपर से वापस वो राइट साइड ऑफ द बॉडी से जा रही है, फिर वो नीचे के राइट साइड ऑफ द फीट में जा रही है, फिर राइट साइड फीट से वो लेफ्ट में जा रही है. ये 3 times हमको ये सर्कल करना है. ठीक है? अब ये क्लॉकवाइज कर लिया. अब हेड टू डाउन एंटी क्लॉकवाइज करना है. दैट हेड से आ रहा है, फिर वो लेफ्ट पैर में आ रहा है, वहां से राइट में जा रहा है, फिर वो ऊपर राइट साइड की बॉडी से गया, लेफ्ट साइड की बॉडी से नीचे आया. इस तरह से 3 times. एंड फील दैट ब्लिस, दैट एनर्जी, दैट फ्लो. एंड देन इमेजिन कि फीट से वो एनर्जी अब धीरे से नीचे की तरफ आई है, ऊपर हेड में, and it has left your body. Okay, and now you will feel very, very relaxed and happy and calm and peaceful. Also because आपके energy centers जो chakras होते हैं, they have opened up. So it is said in the spiritual world कि जो बीमारी हमको होती है, it is because of the blocked energy. That's why जब आप meditate करते हो तो आपको कभी back में ऐसा लगेगा कुछ worm wriggling type of feeling, or you will get like डब 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 इस तरह से, जैसे हार्ट बीट होती है ना, वो वहां पे फील होगा. मे बी कभी लोअर एब में, कभी पैरों में फील होगा. दैट मीन्स दैट व्हेन यू मेडिटेट
you are opening up that energy centers, you know, जहाँ पे भी जो blocked energy है वो basically starts channelizing again. And then जो भी बीमारी उस blocked energy की वजह से होती है वो हमारी ठीक होती जाती है. इसीलिए कहते हैं कि meditation में आप लोगों को इतने टाइम से बोल रही हूँ कि priority पे इसके लिए टाइम निकालो. Of course ये different ये opening up energy centers है. इसके पहले था grounding technique, वो रस्सी वाला, a rope, a cord is going down into the earth and then from there it is conjuring up and pulling up the energy of the earth and flowing through the body. Second वाला ये है energy centers open करने वाला. तो I think हम आज 2 ही कर पाएंगे. Practice करना अच्छा है. Weekend पे हमने पढ़ा इसको. And thank you Reena so much for reading so beautifully as always. Thank you so much. Creating your sanctuary, ये हम कल करेंगे. So वैसे तो sanctuary को यही बोलते हैं that you know it is a place like ये मेरी sanctuary. Have you noticed that when I take the morning sessions I take it from this place only, because if I sit at any other place I don't get the same thoughts and emotions and all of that. So ideally sanctuary का मतलब वो होता है. What is that place of, you know, that place where you sit and chant, that place where you sit and pray. हम सबके घर में, because हम में से बहुत सारे लोग हिंदूज भी हैं, है ना. So हम सबके घर में एक मंदिर होता है और उस मंदिर के सामने की जगह में उसकी फीलिंग अलग होती है. अब वही पूजा आप कहीं और करोगे तो शायद उतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आती है. Similarly, in my house, of course, I can sit any place. Evening sessions, I don't sit here and take, you know, but when I sit here and take, it is a different, you know, the universe talks to me in a very different manner. And the energy flowing through me is also very different. So many times I tell all of you that I've never read and heard about the things that I speak in the morning. I don't know that where it comes from. It comes from my higher consciousness, because obviously in the memory there is a spiritual energy which is stored. Okay, so when I was very, very young, 19 and a half year old, when I had met someone, so someone in you know, like Rajasthan, some pandit, and he had said that, you know, like you are a very, you know, like आप बहुत learning, बहुत बड़े sage थे अपने पिछले life में. I don't believe because I'm like pretty much a party animal and all of that, so I don't know how much truth is there in that. But since I have these thought lines on my forehead, तो तब भी थी, तो तब उन्होंने कहा था that you're a very learned person, so maybe पिछले 2 जन्म पहले कुछ हुआ होगा. So वो जो सारे teachings जो मैंने शायद maybe in previous lifetime I may have given to someone, you know, so that those things sometimes flows, because I have not, so many times when I talk, I, you know, myself, I'm surprised that where is it coming from. एकदम से किसी को देख के कुछ मुंह से निकल जाता है कभी कभी, you know, कभी ये भी निकलता है कि your problem is consistency, or your problem is this, or you know, your problem is relationship with your father. और मुझे तो पता भी नहीं होता because I'm apparently meeting them for the first time. मतलब इतने लोगों से मिलते हैं तो कई बार याद नहीं रहता है वो सब. So एकदम से I say that no, your life में आपको ये बीमारी इसलिए चल रही है because you have a problem with your father. It just comes, you know. So I don't know how it comes. So ये सब होता है, and then sitting here, ये sanctuary में बैठ के ना energy field ही different होता है हमारा. So it's like that. So कल हम वो पढ़ेंगे, creating your sanctuary. I don't know whatever it means. I have not read this chapter. So I am also like discovering this book, you know, because I had read this book earlier, but these chapters of meditation, because I was not heavily into meditation earlier when I had read this book. So मैंने ये सब नहीं पढ़ा था. So this is like every word is unraveling, and then it is so exciting and new for me also. So whenever there is a newness in any case, you know, then you get good results. So yeah, let's see. It's a beautiful book. मुझे लगता है मैम वो उन्होंने सही कहा था, क्योंकि जो हमारे पास्ट लाइफ की अनफुलफिल्ड चीजें रह जाती ना, उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए फिर आप इस लाइफ में भी यही पाथ आपने लिया है. Perhaps, yeah, perhaps, yeah. Yes, so we have lots of hands raised. Priyanka. Thank you so much, ma'am, and good morning, everyone. Thank you for giving me this opportunity, because Sundays ही होते हैं mainly मेरी sharings के लिए. So I have a long list. आपके पति के गाने के लिए होते हैं Sundays, because every Sunday he sings a song for us. So श्याम जी, आपको 24 घंटे मिलते हैं exactly prepare करने के लिए. Sure, ma'am. Sure, ma'am. Thank you, ma'am. I mean, he is always ready. और last Sunday वाली video I have watched so many times. You are looking so super cute in that, ना. So you are so naughty उनका गाना actually. सुन के मैं ऐसी हो जाती हूँ.
Okay, so ma'am, my sharings are like पूरा week की ही sharing है almost. First of all, I started gratitude sessions, taking permission from you, and then For your school. for your school, so I took permission from you, from my principal. So gratitude session for teacher, a student started first. Please, yeah, please. Then it was a time. Then it was a time for my teacher. So प्रियंका, if मैं somebody is waiting for some decision, आप उनसे बात कर लो, तब तक हम next ले लेते हैं, फिर आप No, दोबारा ma'am, बोल देना. actually, my husband and my mother-in-law, they are talking, they are moving here and there. So that's what I was telling them कि थोड़ी देर शांति Husband से and बैठो. auntie, please don't move here and there. Priyanka is talking, don't you know? हाँ, बोलो. So now it was the time for teachers. So most of my teachers were feeling like किसी को बैकएक चल रहा है, किसी को पैर में sciatica पेन है ये वो. So I had a word with my principal that ma'am we should do something for our teachers also क्योंकि इतना unfit इस age में it is not like something good. तो she said what can we do, तुम उनका योगा सेशन ले लो, you are so fit. Then I said मैम मुझसे नहीं होगा, और वही होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप्स, तो मुझसे कोई सीखेगा भी नहीं. In case I want to teach them, then I went to Rishikesh. I told you in June. So I had a word with the manager in from Yoga Rishikesh. कि sir ऐसे ऐसे हमारे teachers के लिए can you come to Delhi and take a workshop? Then he agreed to that. He said okay ma'am, we can come. And he didn't charge even a single penny from our school. They got agreed, and the time date decided was 14th of September, like 2 days ago. So then I was like, I was not able to sleep. दिल में यही चल रहा था, वो भी खुश रहने चाहिए, वो भी उनका भी अच्छा हो, उनका भी अच्छा हो. Like ऋषिकेश से वो मेरे लिए यहाँ पे आ रहे हैं, so उनको पूरी respect मिले. School में there are more than 100 teachers, principal is there, general manager is there. तो उनको ये नहीं लगना चाहिए क्या बुला लिया प्रियंका ने, टाइम वेस्ट है. So then मैम 13th को मैं सो नहीं पाई. 14th early morning 3:30 AM I woke up. मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला, वो एंग्जाइटी और समथिंग लाइक दैट. तो 3:30 एग्जैक्टली मैं उठी, मैं ड्राइंग रूम में आई और मैंने पूरा विजुअलाइज किया. सो विजुअलाइजेशन इतनी अमेजिंग गई 3:30 मॉर्निंग में. सो मेरा डिसाइडेड भी नहीं था कि मुझे क्या पहनना है स्पोर्ट्स वेयर में. सो वो भी मेरे दिमाग में आ गया विजुअलाइज में कि यू हैव टू वेयर दिस. देन एग्जैक्टली जो मैंने विजुअलाइज किया था मैम, मतलब 3:30 to 4 विजुअलाइजेशन रहा. देन 4 to 5 आई रोट अप्रोक्सीमेटली 10 पेजेस. सो मेरे ख्याल से वो 2-3 थाउजेंड में पहुंच गया होगा. लिखती गई बहुत लिखा मैंने. देन मैम डे स्टार्टेड, स्कूल पहुंच गई. जो मैंने टाइम मैजिक डे प्लान किया था एग्जैक्टली सेम टाइम पे आई रीच्ड माय स्कूल. देन सारा सेटिंग किया 8 AM जो उन बंदों ने प्रॉमिस किया था, एग्जैक्टली सेम टाइम दे रीच्ड माय स्कूल. उसके बाद मैंने प्रिंसिपल से मिलाया एंड द ऑरा ऑफ दोज पीपल, two girls were there. So one was gold medalist in 6th Asian Olympic Games. तो वो आई हुई थी और एक और थी रिद्धिम. सो इतना पॉजिटिव हो रहा था. माय प्रिंसिपल वाज लाइक प्रियंका तूने इन्हें बुलाया कैसे, मतलब ये आ गए हमारे स्कूल में, ऋषिकेश से आए. शी वाज सो हैप्पी, सुपर हैप्पी. उसके बाद योगा हुआ मैम, मेडिटेशन हुआ और मंत्र चैंटिंग के बाद तो लाइक देयर वर मेनी टीचर्स, उनका स्ट्रेस रो के निकल रहा था. दे स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग. देन माय प्रिंसिपल सेड कि तुम अपनी लैब में उनको ब्रेकफास्ट करा लेना. और उसके बाद सेशन के बाद शी सेड नहीं 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 नहीं, इनको मेरे रूम में लेके आओ, मेरे ऑफिस में, दे विल हैव द ब्रेकफास्ट विद मी ओनली. अब प्रिंसिपल का ये हो रहा था लाइक शी वाज लाइक एंजॉयिंग अ लॉट विद देम. उन्होंने एक फोन कॉल नहीं अटेंड किया. शी इज द प्रिंसिपल 8 AM से लेके टिल 1 PM वो उनके साथ ही थी. और मतलब शी appreciated me a lot after that. So thank you so much Priyanka, you are thinking a lot about the students, about the teachers. और टीचर्स के सामने भी बोला कि वो कितना कंसर्न है. और मैम इट वाज लाइक आई एम स्पीचलेस. और मुझे कोई थकान नहीं थी, पूरा दिन में इतनी एनर्जी में थी. जैसे बेटी की एंगेजमेंट के बाद वो सब फंक्शंस के बाद होते हैं ना, माँ बाप बड़े रिलैक्स्ड हो जाते हैं. तो मुझे इतना सुपर डुपर अमेजिंग लग रहा था दैट डे. और मैम उसके बाद हमारे आजकल एग्जाम ड्यूटीज चल रही हैं. तो पहले मुझे एग्जाम ड्यूटी में ये लगता था, सो दिस वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंस. सो इट वाज मतलब आज तक ना तो ऐसा कभी हुआ है हमारे स्कूल में और शायद ना कभी ऐसा होगा. इतना अमेजिंग सेशन योगा का कभी भी नहीं हो सकता.
तो ये this was one of the thing, मैम. Everyone is so happy. All the teachers are planning to go to ऋषिकेश. जिनको मेडिकल इशू है वो नाड़ी परीक्षा वगैरह के लिए. So everyone is very happy. So this is one thing I'm really very happy with myself कि कुछ अच्छा मैंने किया. देन सेकेंड थिंग इज मैम कि एग्जाम ड्यूटीज चल रही हैं और जितने भी टीचर्स होते हैं इंक्लूडिंग मी, अर्लियर वी यूज टू कंप्लेन, अरे यार 4 घंटे की एग्जाम ड्यूटी है, 8 से 12 तक एक रूम में खड़े रहो खड़े खड़े पैर दर्द हो जाते हैं. बट दीज डेज बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड यू मतलब मीन्स वट एवर वी आर लर्निंग फ्रॉम यू, वट हैज हैपेंड कि मुझे वो एग्जाम ड्यूटी 4 घंटे की ज्यादा लगती ही नहीं है. As soon as I reach like 8 a.m. I charge my 2 bottles from home. मैं पूरा भर के उसको 20 मिनट के लिए उसको चार्ज करके ले जाती हूँ. फिर उसके बाद when I reach school, सबसे पहले I start writing my affirmation. वो 11 times मैंने अपना बना रखा है. Then 5 points 5 times जो आपने पहले ही बताया था उसमें से भी कुछ points है. I am born to shine and lead is one point which is I am really loving it. Means it has changed my life. जिस दिन आपने पहली बार बताया था अब तक इट इज लाइक सुपर अमेजिंग. उसके बाद देयर आर सम मोर पॉइंट्स व्हिच आई राइट ऑन डेली बेसिस एंड देन आई स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर माय स्कूल. और वो स्कूल की एक ब्रिक से लेके हमारे ऑनर से लेके स्कूल के एक एक नट बोल्ट तक मैं पहुंच जाती हूँ. एंड आई प्ले अ गेम कि अब क्या रह गया उसमें. अच्छा वॉश बेशंस रह गए. अच्छा वॉश बेशंस में क्या क्या होता है. एल की रह गई, ये रह गया. And ma'am, I enjoy the like exam time a lot. ये सेकंड शेयरिंग थी मैम. थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग मी दिस ग्रैटिट्यूड, क्योंकि पता ही नहीं चलता कैसे पूरा दिन निकल जाता है. एंड फुल ऑन एनर्जी मतलब मजा आ रहा है. जिंदगी जीने में ही मजा आ रहा है सीरियसली. और This is so amazing. लास्ट शेयरिंग मैम कि इवनिंग सेशंस जब हम अटेंड करते हैं तो आजकल बच्चे इतनी प्यारी प्यारी शेयरिंग कर रहे हैं कि इतना अच्छा एग्जाम हुआ, वाटर ऑब्जर्वेशन टेक्निक से हुआ. एंड सम ऑफ द चिल्ड्रन दे आर सुपर क्यूट, जैसे प्रियंका मैम टेक्निक से हुआ. सो दे मेक मतलब ऑल इवनिंग्स आर लाइक सो मच फन. बहुत मजा आ रहा है यही मैम. तो मेरा सपना था प्रियंका जो आप बोल रहे हो. शाम के दोनों सेशन, बिकॉज यू नो लाइक फर्स्ट वाला सेशन चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो. वी डोंट वांट एनी यूथ. इमेजिन वो यूथ बनेंगे विद सो मच ग्रैटिट्यूड. सोचो कितनी जिंदगियां, कहते हैं 1 is the mother of 10,000. एक बच्चा 10,000 जिंदगी अपने आसपास बदलेगा जब वो जाएगा. जो बेटियां हैं वो दूसरे घर जाएंगी, उस ग्रैटिट्यूड से अपना बहुत अच्छा पति अट्रैक्ट करेंगे. अभी तो बच्चे हैं, ये सब छोटे हैं, बट यू नो जस्ट टू थिंक ऑफ इट लाइक यू नो उनका वर्ल्ड ही अलग होगा, उनकी दुनिया ही अलग होगी. जो रेडियंस आएगा वो अलग होगा. यही तो मेरा सपना था जो आप बता रहे हो. सो थैंक यू. आई थिंक दिस इज your and my dream come true. Amazing. And in the senior citizen वाला group also, you know, बच्चे माँ बाप बहुत lonely हो जाते हैं because children become busy with their own lives. They want to settle in some other countries. They have to, you know, everybody has to work and grow and take opportunities. So how, you know, like our parents who have done so much for us all their lives, how they can enjoy life now and now they can start dreaming. उनको अभी तक ऐसा लगता था कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई है, मतलब अब बच्चे पढ़ा लिए, उनकी शादियां कर दी, अभी ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, नाउ वी आर डन. Okay, but to make them restart their life and giving them that light and that sparkle that now they can think that yes, I can, you know, like deal with my medical issues, whatever I have, and I can heal it to 100%. You know, they start following these practices and उनकी एक नई जिंदगी phase 2 of their life, you know, नया शुरू होगा, which will be better than phase 1. क्योंकि phase 1 में वो busy थे पैसे कमाने में, घर बनाने में, घर खरीदने में, उसकी EMI पे करने में, गाड़ी खरीदने में, बच्चों को बड़ा करने में, उनकी फीस भरने में. ठीक है, अब उनके पास टाइम है अपने लिए, अपनी ग्रोथ, अपना सेल्फ डेवलपमेंट, और इतनी विजडम उनके पास है. उसके साथ में ग्रैटिट्यूड जब कंबाइन हो जाएगा कि उनकी लाइफ इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता. यही मेरी ड्रीम थी जो आप बोल रहे हो कि बच्चे इस तरह की शेयरिंग कर रहे हैं. सो थैंक यू प्रियंका फॉर एडिंग योर स्कूल चिल्ड्रन टू द इवनिंग ग्रुप, एंड थैंक यू पूनम एंड प्रिया, अनु, आप सब लोग सेशंस ले रहे हो शाम को इतनी शिद्दत से, अपना टाइम लगा के. So thank you for everything. So this is amazing. And Priyanka, you are adding so much value to, you know, like for everything. आप खुद एक डाइट कंसल्टेंट हो और आप स्कूल टीचर हो, तो आपको आपका फर्ज बनता, हम सबका फर्ज बनता है लोगों की जिंदगी में गुड हेल्थ लाना.
लेकिन ऐसा इंस्पायर्ड एक्शन लेना to this level that आपने ये arrange किया, hats off to you and a standing ovation. Bravo. Thank you so much, And ma'am. congratulations. And may you really lead, shine, and rule the world. Shine globally, okay? Not just in India, not just in that school in Dwarka. I think you need to transform the world, and this world needs people like you more and more. Okay, Thank so you so selfless, much, so ma'am. dedicated, so sincere, going down to thanking the brick and the wash basin. I don't know how many of us do it. We have learned today from you, and thank you. Beautiful. God bless you with so much success, and may all your dreams and desires come true. Okay, Thank you और आपके so much, बच्चे भी ma'am. बहुत, आपके तीनों बच्चे बहुत rise and shine करें और दुनिया को lead करें. You know. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Yes, John, sir. Good morning to all. Thank you so much, ma'am. We are getting So your great. voice is very low. Can we do something about it? Lavanya, can you do something about it? She's not there in the house. Now you could able to hear? No. Can you come a little closer to your device? Yeah. No, actually, today I'll just complete. My mother got a throat small gland which is cancerous. Tomorrow we are going to do surgery for her. Please pray. Her name is Savariyammal. She is 80 plus. That is number Okay. one. We are doing our project Accident Free India. Every day we are losing 1,100 lives in India. Nobody is caring. We have found the formula to make it zero fatality. So please pray, and we need to spread this message. It is going to happen. Thank you. Please. Thank you. I heard about your mother's surgery, and it will be the most beautiful thing and a quick recovery. I have already given the affirmation on the group. The second part of it I could not follow. Can anyone share if they have heard? Actually, there's some audio issue. Come tomorrow. There's a project. I'll do it tomorrow. Okay, so yeah, Poonam can share. Huh, Poonam? Ma'am, there's a project where I heard something like like our countries are losing more than 100,000 lives every day, and the project has got something to do with that. Oh, okay. Oh, Okay, okay. so maybe So, tomorrow you बाद can. में हाँ जी बाद में So you can write it down on the chat box if you like. That will be helpful. No? Yeah, or record that message on the group, Yeah. no? Yeah, I mean, like you in your can own write in the voice. Let group. it be Yeah. like that. You send us a voice message because I would really love to hear. And for your mother, of course, you can send her name. We are already, like we'll all do magic wand practice and visualization for her total healing. And that affirmation that I shared yesterday, usme father ki jagah, you can convert it into mother and read that 5 times, 3 times in a day, and then share with us the victory and her quick healing and recovery. And we really wish from all our side the best of health and a miraculous recovery. thank you. Yeah. Thank you. So we are done for today. Thank you. Is there any hands raised? Because I can't. Sandhya's was raised. Sandhya. Sorry. Okay. Now I can see. Yes, Sandhya. Please share. Good morning, ma'am. Good morning. Actually, I'm totally agree with Priyanka, my bestie. Acha, you all are in the same school. As she shared about the Voice is breaking, Sandhya. She's in the move now. That's why maybe Yeah. It's totally gone if you can listen to me. Now you frozen. Video is also frozen. Okay, so you're driving, yeah. So it will be. Deepti ma'am, today you are looking very stunning and I'm looking stunning at 6 o'clock in the morning. I'm glad about it. now we are in different, but the same school. So I am बहुत अच्छी am I लग रही है सच मेरा मन कर रहा है मैं आ जाऊँ आ जाओ आज ही आ जाओ ठीक है मेरा बर्थडे गिफ्ट वैसे भी ड्यू है हाँ आ जाओ आज मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड का बर्थडे जैज का तो वहां पे भी जाना है बट यू कैन कम हाँ जी संध्या yes, Sandhya. अभी है audible, ma'am? हाँ बेटर Okay. Actually, one thing
वॉइस ब्रेक हो रही है। Guys, it is my संध्या network जी or कार Sandhya's रोक के network? विंडो फिर गई बेटा, फिर गई। कार फिर रोक गई। के विंडो तो ओपन कर। कल करती हूँ। संध्या नहीं सुनाई पड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, मे बी यू आर ऑन अ फ्लाईओवर और इन दैट जोन जहाँ पे नेटवर्क जैमिंग होती है। She said that बिल्कुल she'll नहीं। share tomorrow, ma'am. या कल कर लेगी या। सबसे पहले मैं कर लूंगी फिर कल। हाँ, सबसे Share. पहले आप ही I may share करना। प्रिया मुझे याद दिला देना, सबसे पहले हम संध्या का लेंगे। पक्की बात है, डन वो डील। कितना कर रही है ना मैम? क्या करती Yes, होंगी? प्रिया मुझे बोलती है कि जब मुझे सेशन एंड होने वाला होता है, ये प्रिया हमेशा बोलती है, जब सेशन एंड होने वाला होता है तो आप बहुत अच्छे दिखने लग जाते हो। स्टार्टिंग में नहीं होता है। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, कोई और बताओ, लग रही है मेरे को नहीं लग रही है ना? आप बताओ। एक्चुअली जिस दिन प्रिया आती है ना, वो अपनी प्रेजेंस नोटिस करवा देती है। हाँ तो हाँ। यार नहीं, हाँ। सच्ची मैम बहुत सुंदर लग रही है मुझे। अब पता नहीं मेरी अच्छा, ठीक कैसे लग रही है, है। तुम्हारी ऐसे क्यों नहीं लग रही? देखो, मेरी शादी हो चुकी है, नहीं तो मैं तुमसे कर ही लेती शायद, सोचती। नहीं नहीं मैम, लग रहे हैं आप सच में। मैंने मैं ऐसे ऐसे प्रिया को शौक भी सपोर्ट पाले हुए करती हूँ, मैंने। सेकंड कहती हूँ। यू आर माई एंजल, यू विल बी माई एंजल ओनली। Thank you so much. Not only I'm beautiful, deriving the powers of the angel right now, and I will bless you a lot now when you come to my house. थैंक यू। Anji Sunaina, you want to share? Sorry, Sandhya, we would love to hear your sharing, but network. Okay, so tomorrow the first thing, tomorrow would be a holiday. हमारी भी छुट्टी होगी आराम से, तो हम आपको सुन पाएंगे। हाँ सुनैना, आप शेयर कीजिए, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज 7:20 हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। बस 7:27 हो गए। जैसे आप कुछ भी नया शुरू करते हो, आप जरूर शेयर करते हो। तो मैंने भी आज एक और नई चीज शुरू की है। लाइक आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग दैट ग्लैड गेम, यू नो, वो जो पोलियाना। तो नाउ आई डू एवरी डे सिंस मॉर्निंग आई स्टार्टेड। सो बस यही शेयरिंग थी कि इफ एनीबॉडी एल्स वांट्स टू प्ले विद मी, welcome. So I have started doing that glad game. So everything I do, I touch, I'm so glad. I'm washing the utensil. I'm so glad. I'm so mopping glad the I have fingers and water to wash the utensil. Yeah. So me and Sunita, like you, good you know, like reminded us of that me and Sunita when we walk, so हम एक alternate करके करते हैं glad. So I'm so glad that I went to Malaysia and you know Kuala Lumpur. I'm so glad that I could sit on the ropeway and come down to the mall. I'm so glad that I was below the clouds. So you know, you're also remembering all those moments in your life in a good way and your current situation, that I'm so glad I live in such a nice, you know, house with so much of comforts and luxuries because it matters to me. I'm so glad that I have so many taps in the house. Yeah, like this. Keep doing that. You know, नहीं तो वो होता है ना कि normally दिमाग में हमेशा उल्टी चीजें ही चल रही होती है. So at least you're directing your energy and everything towards the glad game. Yeah. And watch Pollyanna movie, guys, if you've not seen it. छोटी सी मूवी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, 1960 की है, वॉल्ट डिज्नी की, अबाउट दिस लिटिल गर्ल हु इज 11 year old. इनफैक्ट रॉन्डा बर्न ने हमको बोला भी है वो पिक्चर के बारे में। ग्लैड गेम वही खेलती थी, वहां से हमने सीखा है, उस 11 साल की बच्ची से सीखा है कि उसके माँ बाप नहीं थे, वो अपनी मासी के पास रहने के लिए आई। इंग्लिश मूवी है ये। मासी के पास रहने आई, मासी बहुत रिच थी लेकिन सिंगल थी बहुत सारे साल, और उनका ब्रेकअप हो गया था अपने लव पर्सन से, जो बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप थी, फिर उनका ब्रेकअप हो गया था, तो वो अकेली रह गई थी। पैसा बहुत था, खूब बटलर्स, नौकर चाकर पूरे घर में, कैसल में रहती थी, वो जो स्टोन के जो स्कॉटिश कैसल्स होते हैं। और किस तरह ये लड़की जो पहले यू नो ऑर्फनेज टाइप में रहती थी, मतलब क्योंकि इसके माँ बाप की डेथ हो चुकी थी 11 साल की, फिर ये आई अपने मासी के घर में रहने के लिए, और कैसे उसने अपनी मासी की जिंदगी में खुशियां भर दी, और क्यों ग्लैड गेम खेल खेल के। तो उसकी मासी ना बड़ी स्ट्रिक्ट थी, जैसे हिटलर होते हैं ना वैसे हिटलर थी बिल्कुल, बाय गॉड। मतलब उसको ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलता था अगर वो 5 मिनट लेट हो जाती थी सुबह उठने में, तो उसको सिर्फ एक सूखा टोस्ट और दूध मिलता था। मतलब उनके यहाँ तो पता लैविश सा ब्रेकफास्ट रखते थे, मतलब टेबल पे सिर्फ मासी के लिए लैविश सा ब्रेकफास्ट आता था। तो साथ में पोलियाना भी करती थी, तो उसके लिए कभी कभी तो उसको वो सूखा हुआ टोस्ट मिलता था ना पनिशमेंट की तरह, तो बोलती थी आई एम सो ग्लैड आई गॉट मिल्क एंड दिस, यू नो। तो उसने पूरे सिर्फ अपने घर का नहीं, घर में इतने सारे नौकर चाकर थे, विलेज में जितने भी लोग थे, मतलब स्मॉल टाउन में वो लोग रहते थे यूके के,
तो पूरे टाउन का दिल जीत लिया था, और उसके बाद उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ कि लाइक उसका क्रिपलिंग वाला एक्सीडेंट हुआ, और फिर उसके बाद वो ठीक हो गई, और फिर किस तरह से, मतलब ग्लैड गेम, वो ग्लैड गेम है। तो पॉलियाना मूवी देखना, छोटी सी पिक्चर है लेकिन मजा आएगा देखने में। तो अच्छा हुआ सुनैना, थैंक यू दैट आपने उसका नाम लिया, तो हम सबको कोई नई इंसाइट मिली। I'm थैंक यू so सो glad मच। to see all of you. क्या? I'm I am glad to so see all glad of to you. see Yeah. all of Yeah. you. Have a ठीक है, magical. चलो भागते हैं। I'm sure all of us must be getting late today, extended because it's a weekend. Bye bye. Thank you so much and have a brilliant day. Write a lot of blessings today. Magic wand practice है, याद रखना आज. And do your meditation. We have learned 2 meditation, grounding technique and opening your energy centers. Okay, remember that. So Chalo, bye bye. much, ma'am. Thank you. Bye bye. Bye. Thank you so